to show what multifaceted opportunities our cooperation can offer. And to make it clear, the Russian delegation did not only come in order to discuss energy issues and sign contracts for the supplies of oil and gas. What we want is development of our multifaceted relations with India on various fields. His Excellency Prime Minister stressed on many occasions in our private talks that India has vast and growing opportunities in many fields, but up until now they haven't been used to the extent both parties want to see it. That is exactly the reason why we convened this forum. And speaking frankly, first and foremost, it focuses on the opportunities of the Indian economy, and we want to familiarize our economic operators with these opportunities so that both parties can satisfy the needs of each other. It is essential, since those are solid and multifaceted ties between Russian and Indian businesses that are one of the main pillars of special and privileged strategic partnership of our countries. Indeed, Russia and India are long-time trade partners. Trade volumes are growing at a sustainable pace, and over the past 3 years we saw a record increase of up to 80%. As a result, last year the Russian-Indian trade volume reached $64 billion. At the same time, it's obvious that there are vast opportunities for further increase of bilateral trade and investment. Russia and India have big consumer markets and an impressive economic, technological and resource potential. Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector, and pharmaceuticals take leading positions in the world. In Russia, we study the Indian experience with interest, and it is used in implementation of our national programs of import substitution and localization of products with high value added. The leadership of two countries, and Prime Minister Modi and I in person, pay particular attention to deepening multifaceted economic ties between Russia and India. Following today's negotiations, we adopted the program for the development of Russian and Indian economic cooperation. This comprehensive document aims at making sure that we can achieve the goal Mr. Modi and I set for ourselves, so that we can increase the trade volume by 2030 to $100 billion. It requires most active efforts of business communities from both countries, aimed at further expanding and diversification of trade volumes and building balanced structure of reciprocal trade. Given the significant trade processes of Russia, the Russian business, our companies are ready to manifold increase the purchase from India of a widest range of goods and services. We are interested in it, dear friends, because it makes our economy more resilient. From their part, Indian entrepreneurs, as was demonstrated by the forum, are equally interested in trading with Russia. They have something to offer, so the synergy is obvious. So it would only be logical that projects contributing to greater supplies of Indian products to Russia receive priority attention in implementation of the new export support program recently adopted by the government of Mr. Modi. From my part, I would like to assure
assure the business circles that all useful initiatives aimed at development of mutual economic exchanges will be further supported by Russian ministries and authorities. No doubt, the key role in creating conditions for a truly free trade between our countries is played by the Intergovernmental Commission. It is important that together in close cooperation we eliminate the Romanian customs and administrative barriers which stay in the way of reciprocal movement of goods, services and capitals. In this regard, a strong impetus, as it seems, could be given by rapid signature of a preferential trade agreement between India and the Eurasian Economic Union. Free trade is unthinkable without a resilient system of bilateral settlements and reliable payment and insurance mechanisms. Tangible advantages are offered by the use of national currencies. It makes it possible to ensure uninterrupted financial transactions regardless of external developments. And obviously, accessibility of transport and logistics communications plays a crucial role. A lot is already being done in this regard. Implementation of the project to create the corridor south-north from Russia and Belarus to the Indian Ocean is ongoing. And infrastructure modernization of the Northern Sea route is being modernized in order to use it for the supplies of Indian goods to the world markets. Obviously, the cooperation of our two countries should not be limited to trade alone. We should move on and enhance our industrial cooperation. Together we should create new cutting-edge products and strengthen technological alliances. First and foremost in such advanced and knowledge-intensive sectors as digitalization, autonomous robotics, pharmaceuticals, including synthesis of efficient pharmaceuticals and production of high-tech medicine equipment. We are ready for broad cooperation with India in the field of artificial intelligence, where our countries have already advanced a lot. Russia is interested in participating in the I've just mentioned it to Prime Minister. We are ready to participate in the Summit on Artificial Intelligence scheduled to take place in India in February 2026. We will send a representative delegation. In conclusion, I would like to stress once again further strengthening of Russian-Indian trade and investment ties and close cooperation between business communities effectively contributes to economic growth and development and greater well-being of our citizens, and therefore it meets the fundamental interests of our countries and peoples. I would like to wish to the participants and organizers of the forum all the best. Thank you for your attention. Thank you, Excellency, for sharing your vision on the immense potential of bilateral trade. Excellencies, now I respectfully invite Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his concluding remarks. Your Excellency, my friend राष्ट्रपति पुतिन, भारत और रूस बिजनेस के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और
साथियों, हम इन अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। ये हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर
बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा
और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements and a few announcements that reflect the wide-ranging multifaceted और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी
और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे
दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है।
इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है।
भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements and a few announcements that reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation under the framework of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. We will begin with exchange of two documents, namely the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on cooperation in migration, and the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. These documents will be exchanged by Mr. Vladimir Kolokoltsev, Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Russian Federation on the cooperation in the field of healthcare, medical education and science, as well as the agreement between the Food Safety and Standards Authority of India of the Ministry of Health and Family Welfare of Republic of India and the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of the Russian Federation in the field of food safety cooperation. These two agreements will be exchanged by Mr. Mikhail Albertovich Murashko, Minister of Health of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We next have two memorandums of understandings. These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Ministry of Transport of the Russian Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters, and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation. These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Sri Sarvananda Sonoval, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. We now have the exchange of MOU between Messrs. JSC Ural Chem and Messrs. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and National Fertilizers Limited and Indian Potash Limited. This document will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Sri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. The last two documents include the protocol between the Central Board of Indirect Taxes and Customs of the Government of the Republic of India and the Federal Customs Service of the Russian Federation
for cooperation in exchange of pre-arrival information in respect of goods and vehicles moved between the Republic of India and the Russian Federation, and the bilateral agreement between the Department of Posts, Ministry of Communications of the Republic of India and GSC, the Russian Post. These documents will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Shri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. I would like to additionally inform everyone that the two leaders have also adopted a joint statement which would be issued shortly. Both sides have also adopted the program for the development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. And we also welcome the Russian side's decision to adopt the framework agreement to join the International Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend, Rashtrapati Putin, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरे दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने
शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, and humanitarian and cultural spheres. As you saw for yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency, and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment, and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion
Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We have established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia and Belarus to the Indian Ocean coast. There are large opportunities for bilateral trade due to the broadening of the trans-Arctic transport corridor infrastructure, including its main artery, the Northern Sea Route. There are many other sectors of the economy where Russia and India have gotten positive experience. We are conducting joint initiatives in industry, machine manufacturing, digital technologies, space exploration, and other science-intensive avenues. For example, in accordance with the commercial agreement signed during the visit, there will be a large Russian-Indian pharmaceutical factory built in the Kaluga region in Russia. We will be starting the production of high-quality anti-tumor medicinal drugs using the advanced Indian technology. In that turn, the Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the business forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of a multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history, and spiritual values of each other.
Scientific and educational contexts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From year to year, we see the increase in tourist flows. Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we have confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with our like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community. As state founders of the BRICS, Russia and India have done a lot of things and continue to do more to increase the authority of the organization. As you know, next year India will assume the chairship in the BRICS. We will provide all necessary assistance to our Indian friends in the work on the relevant BRICS agenda. I would like to point out Russia and India are traditionally closely cooperating in the military technical sphere. Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu, but even now I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your attention. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने
हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट। Foreign Secretary to give his opening remarks. Sir. Thank you, Randir. Good afternoon, or rather good evening now,
Thank you all for being here. As you all know, the President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, is currently on a state visit to India for the 23rd annual summit between India and Russia. He is accompanied by a high-powered delegation comprising several senior ministers and officials of the Russian Federation, and also a very large business delegation. You would also be aware that this year we are celebrating the 25th anniversary of the Declaration on Strategic Partnership between India and Russia, which was established coincidentally during the first state visit of President Vladimir Putin to India in October of the year 2000. And in 2010, 15 years ago, the relationship was elevated to the status of a special and privileged strategic partnership. In that sense, this visit on the 25th anniversary of the declaration of the strategic partnership is indeed a very special visit. In a very special gesture, President Putin was received on arrival yesterday evening at the airport by the Honorable Prime Minister himself. The two leaders then rode together to the Prime Minister's official residence, where the Honorable Prime Minister hosted President Putin for an informal dinner, over which there was a frank and candid exchange of views between the two leaders on a wide range of bilateral, regional, and global issues. This morning, President Putin was accorded a ceremonial welcome and guard of honor at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, following which he visited Rajghat, where he paid floral tributes to the father of the nation. Both leaders then convened at Hyderabad House later in the morning to hold wide-ranging discussions in restricted format, followed by a lunch hosted by the Prime Minister. The leaders thereafter jointly took part in the India-Russia Trade Forum held in Bharat Mandapam just a short while ago, with the presence of key stakeholders from the business community, both in India and in Russia. The focus of the forum was on the shared ambition of both leaders to expand the economic dimension of our bilateral partnership by increasing our bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including primarily by increasing India's exports to Russia, strengthening industrial cooperation, and forging new investment partnerships. The outcomes of discussions during the business and sectoral discussions that have been ongoing over the last 2 days were presented to the two leaders this afternoon. For details on these, I would refer you to our Ministry of Commerce, which has been coordinating these events. Later on in the evening, today, Honorable Rashtrapati Ji will receive President Putin at Rashtrapati Bhavan and will be hosting a state banquet in his honor. Now, as to the focus and outcomes of the visit, both sides have adopted a joint statement, which you might have had opportunity to see. The joint statement testifies to the India-Russia relationship as a time-tested, progressive partnership that is anchored in trust and mutual respect. It reflects the very special nature of our ties and provides a comprehensive framework for further deepening our multifaceted bilateral partnership. In addition to the joint statement, there were several agreements and MOUs that were concluded and exchanged during the visit, some of them in the presence of the leaders this morning.
These include agreements on labor mobility, on maritime cooperation, health, culture, trade, media cooperation, as well as several business-to-business MOUs. And I think the details of these are available on our website as well. Economic cooperation, I would say, is the driving impulse and the most important focus of this particular visit. As I said just a while ago, expanding bilateral trade and strengthening economic cooperation requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia in sectors such as pharmaceuticals, agriculture, marine products, and textiles is important to correct the trade imbalance. And each one of these sectors in considerable detail was discussed between the two leaders today, with both of them pointing to the opportunities that existed in these areas and what were the steps that were needed that could be taken by both sides in order to move towards the mutually shared objective of increasing trade in these areas. Agreements in mobility, as I said, and these are two agreements in particular: the agreement on temporary labor activity in both states, and the agreement on cooperation in combating irregular migration. They form a centerpiece of the understandings reached during the ongoing visit. Indian skilled workers, especially in IT, in construction, and in engineering, will help meet Russia's labor needs and deepen our bilateral cooperation. In fact, there is increasing interest among Russian businesses and industries to hire skilled manpower from India to support growing economic activities in Russia. The India-Russia Trade Forum that concluded just a short while ago, which the leaders attended together today, thus becomes a very key element of the visit. You would have followed that. Both the leaders gave a joint call for action to their respective businesses to expand the linkages between them. In this context, I would like to point to another very significant outcome of this particular visit, which is the program of economic cooperation going up to 2030 that has been adopted during this particular summit. And it also serves to give overarching guidance to both sides to expand the scope of the economic dimension of this relationship. The discussions today also focused considerably on the proposed free trade agreement that is under discussion between India and the Eurasian Economic Union, which is again expected to help address the issue of the trade deficit. It was agreed between the two sides that negotiations should be fast-tracked for early conclusion within the stipulated timelines. The terms of reference for this agreement had in fact been finalized and signed during the visit just a few weeks ago of the External Affairs Minister to Moscow. I think it was in August of this year, when he had co-chaired the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic and Cultural Cooperation with Mr. Denis Manturov, the first Deputy Prime Minister of Russia. During the current visit, both sides also underscored the importance of expediting the discussions and the negotiations on the bilateral investment treaty, which again will help energize investments in both directions. In addition to this, connectivity initiatives were also discussed, including the International North-South Transport Corridor, the Eastern Maritime Corridor, the Chennai-Vladivostok route, and also cooperation along the Northern Sea route. These corridors, again, are expected to energize economic linkages, reduce transit times, and expand our trade access across Eurasia and beyond.
India-Russia defense and military technical cooperation remains robust. Russia also continues to support India's Make in India initiative in this domain, including through joint production and technology transfer. This is also an area that was discussed between the two leaders. The Prime Minister appreciated President Putin's support in expediting the opening of two new Indian consulates in Kazan and Yekaterinburg. The plaques for the two new consulates were, in fact, again unveiled by the External Affairs Minister during his recent visit to Russia for the SCO Heads of Government meeting. These consulates will further deepen our regional outreach in Russia and enhance trade, academic exchange, other kinds of collaboration, including culture and people-to-people ties. On global and multilateral issues, both leaders reaffirmed their shared commitment to the reform of global governance. We underlined the imperative to reform the UN Security Council to reflect contemporary realities, and our collaboration in forums where both India and Russia are members, such as the G20, BRICS, and SCO, remains forward-looking. Now, President Putin also briefed Prime Minister at considerable length concerning recent developments on the conflict in Ukraine, including on the talks that are currently underway between Russian representatives and US authorities. Prime Minister reiterated India's long-standing position on this conflict, emphasizing India's interest in seeing the earliest possible cessation of hostilities and a sustainable resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. And you would have heard the Prime Minister's remarks during the press event earlier today. India stands ready to provide any assistance required in this effort and to play an appropriate role in this effort. The two countries also, or rather the two leaders also discussed the situation in other regional hotspots around the world. On terrorism, the two leaders reiterated their resolve to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism, and the Prime Minister reiterated India's zero-tolerance stance on terrorism, and President Putin reiterated Russia's support for India in this effort. So to conclude, I can say that the visit has helped deliver some very substantive outcomes. The rich discussions between the two leaders have helped deepen the trust and mutual respect for each other's core national interests. As I said earlier in my remarks, the overarching focus of this particular summit was to expand and strengthen the economic dimension of our partnership, to advance towards the shared goal of reaching $100 billion in bilateral trade by 2030. The India-Russia relationship also remains an anchor for constructive engagement in an increasingly complex geopolitical environment, and both our sides are committed to continue to do our part in addressing the challenges that the current environment poses for both countries. Let me stop here, and if you have some questions, I know we have a hard stop in a short period of time, but we'll be happy to take a few questions. So, can we begin with Pranay here? Foreign Secretary, this is Pranay Upadhyay from India Today Aaj Tak. The joint statement mentions about the interoperability of the payment system and the currency exchange system as well in rupee-ruble trade. So, what is the mechanism agreed between India and Russia to make it, insulated from the Western sanctions? And how many Indian banks are ready to accept ruble as a mode of payment? Siddhant?
Hi, sir. So my question is, geopolitical message by both Russia and India in terms of economics at a time when their countries engaging in protectionist policies. And my second question is, we have extended the visa facility, the 30-day e-visa facility for tourists, Russian tourists. Have they also extended similar facility for the Indian tourists? Keshav? Thank you, sir. Keshav here from the print. My first question is on this irregular migration from the Mobility Pact. Here, sir. Is there anything in this pact that deals with the status of the Indians in the Russian army, and was that raised between the two leaders at any level? And I just wanted a clarification from the joint statements. It had a line on Iran, and that only through dialogue can the Iran nuclear situation be solved. And we saw that India joined the joint statement of the SCO condemning the strikes earlier in June on Iran. Does this signal a sort of change from the original positioning that India took in June when the strikes were taken on the Iranian nuclear facility, as India has deepened its ties with SCO and Russia in the last few months? I just wanted to check on that. Thank you. Madhu? सर, जैसा कि जॉइंट स्टेटमेंट में हमने देखा कि टेररिज्म को स्पेशल मेंशन दिया गया है मधुरेंद्र न्यूज़ नेशन से, और साथ ही स्टेटमेंट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने मेंशन किया ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि अभी भी ऑन है। तो क्या दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बारे में बातचीत की कि कैसे आगे टेररिज्म को टैकल करना है, उसको लेकर क्या ज्वाइंट बातचीत हुई? क्योंकि पहलगाम हमले का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन उसके ठीक बाद दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, वो भी एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी कोई जिक्र हुआ? Kalol? Kalol from the Hindu, sir. The Prime Minister referred to Bharat-Rus Mitrata एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. Would you please elaborate on what is exactly the meaning of, could you please expand on the meaning of Dhruv Tara in this context? I mean, is it really equivalent to Pole Star, or is there a strategic dimension to it that is actually here in this statement? So we can take these questions. On Pranay, your question on interoperability, payments, the resort to payments in national currencies, that is increasingly happening for bilateral trade. Look, both countries are continuing to work together to promote mutual trade in our national currencies. You would be aware that special rupee Vostro accounts have been opened in significant numbers. They right now form a very effective mechanism in terms of lubricating, so to speak, the trade flows between the two countries. In terms of numbers, I don't know if I recall immediately, but I think there are more than 24, close to 24 banks that have opened a large number of these special rupee Vostro accounts that facilitate the trade between the two countries currently. We also hope, as I said, one of the major objectives during this visit was to reach understanding on how to increase Indian exports to Russia so that we can better address the trade imbalance between the two countries. I think doing these two things together, handling the trade balance together with expanding opportunities for settlement in national currencies will allow us to move towards this particular objective. Siddhant, your question on geopolitical messaging. Look, the India-Russia relationship, as I said, is an important relationship, not just bilaterally, but in terms of its regional as well as global significance. I have mentioned that it
remains an important anchor for constructive engagement in a very complex geopolitical environment. This particular visit, as I said, its focus was on economic issues, on further building the industrial partnership, the investment partnership between the two countries. These are issues that have actually risen to the fore in current times. If you look around the globe, supply chains are under stress, trade relationships are under stress, investment is becoming more and more unpredictable. And therefore, in this environment, for our two countries to focus on these issues, that is a message in itself. On the visa facility, we have made these announcements at the present moment in order to promote Russian tourism into India. You would have probably seen the details. We have offered a 30-day e-tourist visa on gratis basis. This is on the basis of reciprocity. And we have also, I think, for the first time, started to look at group tourist visas, and that is also being done with Russia for the first time on a gratis basis. On the question related to whether the mobility agreement has something to do with the unfortunate issue of Indian citizens being caught up in the conflict in Ukraine by way of recruitment into the Russian army. This particular agreement doesn't have specific reference to that. In any case, I can share with you that this issue of the recruitment of Indian citizens into the Russian armed forces was broached by the Prime Minister, and our concerted efforts continue on a regular basis to secure the early release of Indian citizens from the Russian army. I would just take this opportunity to reiterate once again that our citizens should avoid very, very carefully any offers to join the Russian armed forces. We are seeing several cases of people stranded there and appealing to be rescued and brought out from there. And as I said, we are actively engaged in that effort. On the issue of the reference to Iran and no, I mean, the short answer to your question is that there is no fundamental change in our position on this particular issue. मधु, आपका प्रश्न था कि आतंकवाद को लेके जो आज बातचीत हुई और जो आतंकी हमला दिल्ली में हुआ, आपकी बात सही है। ये इस विषय पे खुल के बातचीत हुई दोनों लीडर्स के बीच। प्रधानमंत्री जी ने आज आपने देखा होगा, अपने प्रेस के वक्तव्य में भी उन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका वर्णन किया और ये भी कहा कि पिछले साल रूस में मॉस्को में क्रोकस हॉल में जो एक आतंकी हमला हुआ था, इन सभी हमलों की जड़ एक है, एक जगह है और हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। तो इस पे बातचीत हुई और जैसा मैंने पहले भी कहा, रूस की ओर से हमेशा हमें इस विषय पे सहारा मिला है, उनकी सहानुभूति मिली है, उनकी मदद मिली है और हमें आशा है कि आगे भी ये जारी रहेगा। कलोल, I think partly, the answer to your question is in the translation of Dhruv Tara. But really, seriously speaking, the
fact is that what the Prime Minister was trying to convey was to underline the sustained and long-term significance of this relationship. That this relationship is a constant, and it has been there over a period of time. It has been a time-tested relationship. There have been several crises along the way, but they have not affected the fundamentals of this relationship. And the fact that today we are, in a sense, also observing the 25th anniversary of the strategic partnership, it's come a long way. There has been progress in multiple areas. So, in a sense, the sustainability, the certainty of this relationship, I think this is what the intention was in the use of that term by the Prime Minister. Thank you. So we go Rajesh. Good evening, sir. I'm Rajesh Roy from the Associated Press. Wanted to ask if the Russians conveyed their position on the recent US sanction on two of Moscow's biggest oil producers, Rosneft and Lukoil, which is an attempt by them to force countries like India to cut down on imports. Secondly, did the Indian side seek expeditious delivery of S-400, the remaining two squadrons of the air defense system? Any exploration for purchase of additional units, upgrading Su-30 fleet, and purchase of advanced fighter jets like Su-57? Shruti. Thank you, sir. Shruti Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, if you could give us an understanding whether there was any discussion on oil and whether India and Russia, what they do about the oil trade. And secondly, in the joint statement, we see an elaborate mention of the nuclear power plants in both sides discussing a second site. If you could elaborate on that, sir. Akhilesh. सर मैं अखिलेश सुमन हूँ डीडी न्यूज़ से। एक आम आदमी का सवाल है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं रसिया में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और जब वे वापस आते हैं तो उनकी डिग्री को मान्यता तो मिलती है, लेकिन उनको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो आज हेल्थ कोलैबोरेशन की बात हुई, एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए साइन किया गया, तो क्या इस इशू को भी टिकअप किया गया है या आगे किया जाएगा कि उनको यहाँ प्रैक्टिस के लिए 1 साल का इंटर्नशिप या फिर एग्ज़ाम नहीं देना पड़े? Excellency, this is Anangsha Matra. Excellency, President Putin has presented a Russian language edition of Gita. We know the history. And is there any discussion on Russian community in Mayapur in West Bengal? There's a big habitat, in fact, which hosts largest number of Russian community in West Bengal's Nadia district in Mayapur. Is there any discussion on them, as well as any discussion on Rupur nuclear plant in Bangladesh? Thank you. Okay. Sumita. So this is Sumita from ET Now. I have a question, a follow-up question to what Sudhi asked, essentially about the energy security. And the Prime Minister stated that this is an essential pillar of the partnership. President Putin stated that we are ready to continue uninterrupted shipments. But can you elaborate on the agreements that were reached as far as the energy security spectrum is concerned? And secondly, on your point about addressing the trade imbalance and the fact that this visit was essentially focused on economic issues, is there a near-term guidance? You spoke about a long-term guidance, but was there any near-term guidance that was given? I think insofar as the Russian position on the sanctions that have been imposed, well, obviously there was a discussion on what has been happening with regard to energy cooperation between the two countries, and the Russian side put forth its position on the measures that have been taken by a number of countries. You didn't have to be inside the room to guess what that position is. It's fairly obvious. But insofar as the discussions on related to energy are concerned, and this also goes to
I think the last question posed on the narrative on energy security. We have been fairly clear in terms of communicating that as a significant importer of energy, our priority is to ensure that 1.4 billion people in India have their energy needs secured. And our energy sourcing policies are guided entirely by this imperative. Ensuring stable energy prices and secure supplies are the twin goals of our sourcing policy. And part of this, therefore, goes into the area of diversifying energy supplies, and our partners, traditional as well as new, understand this and appreciate this. They also appreciate that Indian companies will take, and I point to the fact that this is something that covers both private companies as well as public companies, because in both cases, these are publicly listed companies. They have fiduciary responsibilities, and therefore, these companies make decisions on the basis of evolving market dynamics, on the basis of the commercial issues that they confront while sourcing their supplies. Within the four corners of this approach, we are continuing our cooperation between the two countries. On your other question related to various defense platforms, I think you would be aware that yesterday evening there was a meeting between the defense ministers of the two countries in the framework of the India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation. I don't have the details or readout of that particular meeting, but I imagine that these issues that you referred to were discussed in that meeting. Between the Prime Minister and President, as I said in my earlier remarks, there was a general discussion on the robustness of and the long-standing nature of the India-Russia defense and military technical cooperation, and the fact that Russia is also participating in several Make in India defense related programs. And a lot of the focus was on, in fact, legacy cooperation between the two countries. But for the specifics, I think you would have to refer to the discussions yesterday that took place between the two delegations of the ministries of defense of the two countries. Shruti, insofar as your question related to oil is concerned, I think I've already answered. On the nuclear power project, as you are aware, actually there was a considerable amount of discussion on nuclear-related issues between the two leaders. Kudankulam 1 and 2, as you are aware, are already connected to the national grid, generating electricity. Work is currently underway on units 3 to 6, where, in fact, a number of the critical shipments with regard to units 3 and 4 are underway, and work to conclude agreements for similar things with respect to units 5 and 6 is already also proceeding in parallel. When it comes to the second site, this is an issue that has been under discussion between the two countries for some time now. As you are aware, selection of a site for a nuclear power plant is an elaborate and complicated exercise, has to take into account various factors related to siting, including environmental and other related factors. These are all under consideration of the concerned authorities in the Department of Atomic Energy. We'll update you whenever there is a further development with regard to this. अखिलेश, आपने मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में जो सवाल पूछा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रूस में जो हमारे किसी भी
विदेशी मुल्क में हमारे विद्यार्थी जब पढ़ने जाते हैं, जब मेडिसिन की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ डिग्री मिलती है। लेकिन भारत में एज अ मेडिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने से पहले उन्हें एक इम्तिहान पास करना होता है, जिसे FMGE कहते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। और नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC जो है भारत की, ये इस इम्तिहान को, इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये भारत की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि बाहर से जो लोग पढ़ के आएँ, उनके लिए एक हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को ये स्टूडेंट्स मीट कर सकें, उसके लिए इम्तिहान ज़रूरी है। इसका रूस के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सभी देशों के लिए है। किसी भी देश में बाहर से कोई विद्यार्थी पढ़ के आए, मेडिसिन की पढ़ाई करके आए, उसको वापस आके ये इम्तिहान देना ही होगा। तो इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिकली रूस को लेके, उनसे लेके कोई प्रोविज़न नहीं है। I really don't have anything on this issue related to the Russian community in West Bengal. Actually, I've learned something today. I wasn't aware that there was one. Okay, but no, this did not come up in the discussions today. But I'm sure that the ambassador will probably look into it in much greater detail and probably see where we have. You asked about Rupur. There is ongoing collaboration on Rupur. Work is continuing on that, and we remain in touch with both our partners in Russia as well as in Bangladesh on taking forward the work that needs to be done on this. And finally, Sumita, I think the energy security part I answered, but on trade imbalance, insofar as the near term is concerned, I think it might interest you to know that in the recent past, as a response to the stresses that we have faced on several other fronts, we have, of course, engaged with various partners on looking for new markets, new consumers, etc. We have done the same with Russia, and in fact, in a very positive and I would say gratifying development, there are several sectors primarily related to fisheries, if I'm not in the maritime marine products, and agricultural and horticultural products that we have seen new markets being developed. There was a reference to this fact today that there was uptake of Indian exports in a very short period of time in terms of the requests being made and the orders being placed and the exports actually being realized. And there was encouragement to take this further, and in fact the Russian side said that they would be ready to look at other products. In fact, there was a reference that if we were able to export these products in large quantities to many other parts of the world, there was no reason why they could not be exported to Russia as well. So short-term guidance, if you will, was for exporters to connect more intimately with each other and explore opportunities. And that is also what the forum this afternoon was all about, in terms of getting the importers and exporters together to explore these very opportunities. Well, thank you very much. With that, we come to the close of this session. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. हाँ जी, यार आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने business community both in India and in Russia. The focus of the forum was on the shared ambition of both leaders to expand the
economic dimension of our bilateral partnership by increasing our bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including primarily by increasing India's exports to Russia, strengthening industrial cooperation, and forging new investment partnerships. The outcomes of discussions during the business and sectoral discussions that have been ongoing over the last 2 days were presented to the two leaders this afternoon. For details on these, I would refer you to our Ministry of Commerce, which has been coordinating these events. Later on in the evening, today, Honorable Rashtrapati Ji will receive President Putin at Rashtrapati Bhavan and will be hosting a state banquet in his honor. Now, as to the focus and outcomes of the visit, both sides have adopted a joint statement, which you might have had opportunity to see. The joint statement testifies to the India-Russia relationship as a time-tested, progressive partnership that is anchored in trust and mutual respect. It reflects the very special nature of our ties and provides a comprehensive framework for further deepening our multifaceted bilateral partnership. In addition to the joint statement, there were several agreements and MOUs that were concluded and exchanged during the visit, some of them in the presence of the leaders this morning. These include agreements on labor mobility, on maritime cooperation, health, culture, trade, media cooperation, as well as several business-to-business MOUs. And I think the details of these are available on our website as well. Economic cooperation, I would say, is the driving impulse and the most important focus of this particular visit. As I said just a while ago, expanding bilateral trade and strengthening economic cooperation requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia in sectors such as pharmaceuticals, agriculture, marine products, and textiles is important to correct the trade imbalance, and each one of these sectors in considerable detail was discussed between the two leaders today, with both of them pointing to the opportunities that existed in these areas and what were the steps that were needed that could be taken by both sides in order to move towards the mutually shared objective of increasing trade in these areas. Agreements in mobility, as I said, and these are two agreements in particular: the agreement on temporary labor activity